of you. And in today's class, the first lecture is about IELTS Writing Task 1. Uh, we will study about what actually IELTS Writing Task 1 is. There are two tasks, as you all know, that when we call Task 1 and the second one is called Task 2. And Task 1, you do understand it's about the first part, clear, the first task in your IELTS writing, it's report writing. So we will try to understand what actually report writing is and how much time you may spend. Let me add all the students. Okay. So the first task, we call it report writing, task 1. And in fact, you will be in exam, you will have some graphs and there are different graphs, 7 different type of graphs you may expect, clear. And inshallah, in the class, we will try to cover them up. So IELTS writing task 1, it's visual representation of information. It can be line graph. These are the graphs we will study, inshallah. Let me write the names. The first one, we will study line graph. Then we will talk about bar chart. We will study about pie charts. We will talk about pie. Let me aid the students as well. Okay. Pie charts and table. You may expect a process diagram. There can be a map, or you may have multiple charts. So there are total number of clear graphs you may have in the exam. They are 7. And then knowing and understanding all of these 7 type of graphs, they are important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7. And inshallah, we will cover all these 7 graphs one by one. Uh, Most of the time, students, what they do, they prepare only one graph. For example, line graph, they study line graph, and then they think like, if I practice line graph or study about line graph, I will be able to write about all the graphs. No, he's totally wrong, because all graphs, vocabulary we use for graphs and the way we write on graphs, they are totally different. They're not the same. So we do not deal all graphs the same way. All graphs are totally different. First of all, number one. Point number 2 is that most of the time students they think that may have only line graph in the exam. No, you can expect any of the 7 graphs. It can either be line graph, bar chart, pie chart, table, process diagram, map, or multiple charts. So you can never clear say that I will have line graph only or bar chart or pie chart. No, it depends on your luck. What comes in your luck, clear. If you may have line graph or you may have pie chart. So it depends on the exam. So make sure that you prepare well all different types of graphs, and inshallah we will try to improve them. So total time you will have for this one, clear, for task 1, that's 20 minutes time. And what I suggest to you, there are 2 tasks, task 1 and task 2. Task 2 is an essay writing. And I told you that task 2, it worth clear, it worth double, 2x. So it means that 66% of your score is from task 2 and 33% of your score is from task 1. So what I suggest you that for IELTS writing, you will have only 1 hour time. And I want you to write task 2 first, not task 1. First of all, write task 2 and you're allowed, clear, you're allowed. You can write task 2 or task 1 first. But what I suggest you to go for task 2 first. Then you may come towards your task 1. And words, clear, you're allowed to write down. You can write minimum 150 words, minimum. If you write less than 150 words, so what does it mean? It means you are short of words and you will have less span in your IELTS writing task 1. So maximum number of words you can write 170 to 190. Do not exceed, because more words means more mistakes and more mistakes means less band. So make sure that you write in between like 160 to 170 words. They are more than enough words. So there are 4 marking criteria for your IELTS writing task 1. The first one, we call it task achievement. What actually task achievement means, that address all the requirements, clear the requirements, whatever you're asked
by the examiner in the question, you need to fulfill all the requirements. For example, you need to write introduction, overview paragraph, and then main body paragraphs as well. And then you need to select key features. We will study one by one them. Then there should be clear, your information must clear arrange logically, and you need to use some cohesive devices as well to link clear ideas. So there should be a logical, clear organization and your essay as well for task one. And then vocabulary we use, inshallah, we will study vocabulary for each type of graph. If that's line graph, so what type of vocabulary we can use. If that's bar graph, clear, for each we use different vocabulary words. So make sure you develop your vocabulary because it's an academic part and you can't use vocabulary used in task two. For task one, we have separate clear vocabulary words and you need to have, you will learn it and then you can use them. And the last one, we must have grammatical range and accuracy. And about the grammatical range and accuracy, uh, you are supposed to use different sentence structures. I will teach you, inshallah, different sentence structures. And they should be like, you need to produce error-free sentences as well. So we will work like you will be marked clear based on four areas. Number one, that is called task achievement. Number two is CC, coherence and cohesion. And the third one, lexical resource. And the fourth one, we call that grammatical range and accuracy. So four areas. And if I say that each area clear, it contributes equally, like for example, for task achievement, TA, the score is 9 band. And exactly the same with GRA, 9 band, grammatical range, and for LR, lexical resource, again 9 band, and then you will have CC, 9 band. So if you calculate all 9 multiplied by 4, so is equal to 36. 36 divided by 4, so is equal to 9, overall 9 band. So what we want to do clear here, that's depends on you. You need to improve all four areas because examiner will check clear each section, each part clear separately. Like for example, that's task achievement. And what if you score 7 here? And then if it comes about GRA and you score 6 and L clear LR lexical resource, you score 7. And if you score here 5. So if you multiply all of them, 6 plus 7, so it becomes like 13. 13 plus 7, that's I Right. think 21, and then 6, 26. So 26 divided by 4 is equal to 6.5. So your overall band is 6.5 now. So if you improve each part clear, so you will improve your overall score as well. To improve your overall score, you have to improve each section. And we will try to work on all these four areas, inshallah. Now, we want to move towards that, the next lecture, and it's about chapter number 2. It's about the four golden paragraph structure and how to write introduction. So the first part, clear, inshallah, we will study about that is these are the four structures clear to complete. As I told you earlier, that there are 7 different graphs. If there are 7 different graphs, so for all 7 different graphs, you can use this structure. These 4 paragraph structure, we can use this one. The first one, that's about an first paragraph, that's an introduction paragraph. The second one is overview paragraph. The third one, main body paragraph 1, and then main body paragraph 2. If any of the paragraphs clear is missing, so you will score low band. So make sure you write down all 4 paragraphs. The first one we will study introduction, then overview and main body paragraphs. How to write for each, we're going to develop that. But keep in your mind, clear, that we are going to use 4 paragraph model. For any graph, there are, as I told you earlier, there are 7 different graphs. For all 7 different graphs, we are going to use clear 4 paragraph structure. And then you can name the first paragraph is an introduction, overview, then main body paragraph 1, and then 2. Okay, in today's lecture, we're going to talk about how to write the introduction clear for your introduction for that of your, what do we call, graph, any of the graph clear. So how we can write the introduction. Now, this introduction, we're going to write only for 4 paragraphs,
not for all of them. As I told you, there are 7 graphs, but we will study only for 4. Number 1, line graph. The first, this one, clear? Then number 2, bar chart, and then we can say pie, and then table. For these 4, you can use this formula, clear? But for the other 2, like we have process diagram and also a map, we will study another. We write differently those 2, clear? The introductions. So, but for these 4, the way we write the introduction, they are same for all. Yes, please. Any question? All right. So what actually we need to write here, how to write an introduction for this part. So the introduction is the very first sentence of your essay. It's clear. Its only job is to introduce the chart by the examiner, clear? And this is the formula we are going to use in that. And in this formula, we have got 5 points. If you want to write an introduction for line graph, bar chart, pie chart, or table, so we're going to introduce 5 points in it. How many points will be there? There will be 5 points. The first one, point number 1. Point number 1, you can use name, clear, name of the graph, name of the chart or graph. IELTS usually, they don't provide you with the name of the graph, clear? So they would say the graph shows or the chart shows. They don't mention, like they say, the chart below shows. So they don't mention name of the graph. So what's your first, clear? The first thing, what you need to do here is to name the chart. For example, you can say the line graph. Naming the graph is important for you. You should know about, there are 7 graphs and you must know about names of the graphs as well. So as I mentioned earlier, the first point is I have written here, what is that? Name the graph. Point number 2, verb. IELTS usually they use verb shows, and you're supposed to change this verb shows. Either you can write illustrates, demonstrates. I will give you a list, player, you do have in this book. Demonstrates, represents, depicts, clear? So compares, different verbs you can use. So the second point, you need to change verb. Third one, point number 3, and point number 3 is about you should mention subject. Clear? I have mentioned what, so what means subject? For example, the graph is about oil, clear? Prices of oil or oil production. So if it's about oil production, ignore the spellings. Oil productions, clear? So you need to mention name of the what the graph is all about. So if it's about, for example, IELTS admissions, or whatever, clear? So you can write IELTS admissions. Then the fourth one, it can be about what, where, name of the place, where. For example, that is in Pakistan, so write Pakistan. If it's about Australia, write Australia. It's in Germany, write down Germany. So mention name of the next point is mention name of the place. That's important. And the fifth one, clear, the last one, it's about time period. Usually IELTS, they will give you clear, like for example, in 2000. So then mentioning clear the time period is important for you to write it down. So, or they can say from 2000 to 2005. So from is followed by to, from is followed by to. Then you can paraphrase it. You can write between 2000 and 2005. So between is followed by and to is followed by from is followed by to. So there are 5 major points in introduction. We will study them one by one now. The first point, as I mentioned earlier, that is about name the chart. Number 2, verb. Number 3, subject. Number 4, where, the place. And number 5, time period. Let me show you a practical example and then you will understand a bit more clearly. Can you all hear me? Sir, can Yes, I sir. ask you a question? Yes, please. सर जैसे हमारे पास आई टेस्ट में आता है मतलब वो चार्ट बना होता है मैप पूरा दिया होता है
तो क्या वो एक दफा आप हमारे सामने राइट करेंगे? Uh, I will teach you all seven, ma'am. I will teach you all seven. None of the graph will be left out, okay? ओके सर। I will teach you all seven graphs, not one or two, not three, clear? All of the graphs I will teach you and I will let you know how to write it. We will take examples, everything, okay? मैं practically समझाता हूँ और आप लोग मतलब समझने की कोशिश करेंगे. Don't you worry, okay? Task one, we will finish, inshallah, within 2 weeks. अब यहाँ पे देखिए, this is my, for example, this is one of the practical examples. Can you see? अब आप मुझे बताइए, because this is statement, clear? This is statement. And this statement has to be paraphrased. We call it what? Paraphrasing. Paraphrased. I will teach you how to paraphrase, techniques for paraphrasing as well later on. लेकिन अगर आप इस statement को देखें तो as I told you five clear points in any of the statements. Number one, the graph. Look at this, the graph. Then shows the second verb. Then I told you it's about what. So can you see? It's about what? And then where? So, yes, Clear? sir. And then when? All points are available here. Am I right? All five Yes, sir. points are available. So any type of graph, if you have, they will give you what? 5 points there in that case. So then you're going to paraphrase them, these 5 points. Clear? Let me show you another example, then you will understand a bit more clearly. Sir, page number. It's not in the book. Okay. Yeah, I will share the slides, no worry. अब इसे देखिए आप लोग, and let's take example for this. The line graph. Name of the graph one, then shows this is what, 3 different countries where, and then can you see the time? So any Yes, sir. statement, clear, any statement, if you take any of the statements, so there would be, how many points are there? There are 5 points. Number one, name of the graph. Number two, as I mentioned, Claire, yes, verb. Number three, what, and number four, where, and then when. These are the 5 points. Is this clear? Now, we are going to talk about another point we will clear today, inshallah, in the class that, okay. So the screen got Yeah, disappeared, yeah, sir. yeah. I'm gonna show you now. Is this visible now? Yes, sir. All right. Now we want to Sir, like it's if not visible. you, sorry, I'm not visible. No, sir, visible. Okay. Sir, it's visible. Okay. अगर आप, if you just focus clear, like can you see point number one shows the amount of money spent on books and where and then when. Am I right? ठीक है ना? तो जो भी क्वेश्चन हो, अब इसमें देखे आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे, the graph clear, changes verb and the number of interests clear, 3 different countries and then the time period. तो जो भी हो तो आपके पास 5 points होंगे, ठीक है जी? अब हमने क्या करना है, what we are going to do to study about the paraphrasing technique, कि हमने इसे क्या करना है, paraphrase करना है. किस चीज को paraphrase करना है? We are going to paraphrase the statement. We are going to paraphrase the statement. Clear? जो भी statement आपके पास हो, जैसे हमारे पास ये statement है ना, अब this is the statement, the question. Clear? What we call it? We call it statement. तो इस statement को हमने क्या करना होता है, ये पूरा इसे हमने पैराफ्रेज करना है. Am I right? इसी चीज को हम कैसे पैराफ्रेज कर सकते हैं, and what are the methods we are going to study about them. So there are clear 5 paraphrasing techniques that we can use. Number one, synonym swap. You do understand, clear? Synonyms swap. This is the most common one. The most common method and the most common technique we can use, that is called synonym swap. For example, and the question or the statement, they have written the number of, you want to change to quantity of. They have used cars, you want to use vehicles. They use produced, you want to use manufactured. Right? So the first part is what? Synonym. You can use synonyms for words, clear? They have mentioned there. And then technique number two, change word order. Okay. What I mean by word order, like you can, for example, change the place, clear?
rearrange the structure, sentence without changing its meaning, move time phrase, subject phrase, or adverbial to different positions. For example, we have said this is the original clear by 15% in the last 10 years. Now, can you see I brought it to the beginning? So we use in the beginning, and then we have used the same thing again. So now this is called what you can bring some of the changes in your word order. Clear? Words order. If there are some classes, so you can even change the class. You can change the class, or you can do what? Just bring some of the changes. There are two things. They're very important. They do not only change the synonyms. Okay, do not only change the synonyms, but try also to change what? Let me clear you a bit. If there Structure is a of दोनों को साथ student, में sentence. यूज करेंगे ना sorry, इसमें सिनोनिम भी हम यूज कर सकते हैं ना ये तो मैम अभी जस्ट दो एग्जांपल चीजें दिए जी पैराफ्रेजिंग का आप चीज इसे इसे थोड़ा समझे। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं है, पैराफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं है कि ओनली यूजिंग synonyms. स्ट्रक्चर सेंटेंस Yes, synonyms plus structures. यस Paraphrasing means changing using synonyms as well changing structures. अब synonyms जो है LR से है, किस चीज से? LR लेक्सिकल रिसोर्स से है। लेकिन स्ट्रक्चर किस से? GRA से, ग्रामर से है। अगर एक स्टूडेंट इफ अ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ synonym इस्तेमाल कर रहे और उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं लेकर आ रहा, तो उसके तो वोकैबुलरी के स्कोर तो इंप्रूव होंगे, लेकिन जो ग्रामर है, स्ट्रक्चर्स है, उसके स्कोर तो इंप्रूव नहीं हो सकते। एम आई राइट? Yes, sir. तो आप लोगों ने क्या करना है? यू हैव टू चेंज, क्लियर, ब्रिंग चेंजेस इन बोथ। आपने सिनोनिम भी इस्तेमाल करने हैं और साथ में आप लोगों ने ग्रामर जो स्ट्रक्चर है उसे भी चेंज करना है। अब ये जो है दिस वन, लाइक वी ब्रॉट सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, क्लियर? तो ये इसमें इसके थ्रू आपके मार्क्स किस चीज में इंप्रूव हो रहे हैं? GRA में, ग्रामर में। Yes, इसके sir. तो आपके सिनोनिम इंप्रूव, लेकिन एक स्टूडेंट है बिल्कुल लकीर के फकीर लिख रहा है, तो फिर आपके स्कोर उसमें चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, एक हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक हमारे पास है चेंज वर्ड फॉर्म। ये नेक्स्ट वन है। अब चेंज वर्ड फॉर्म किस चीज से रिलेटेड है? इट्स अबाउट ऑल अबाउट ग्रामर। ये भी ग्रामर है ना? अगर आप वर्ड फॉर्म चेंज करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब किस चीज में हम चेंज कर सकते हैं? नाउन में। अगर एडवर्ब है, तो एडवर्ब को चेंज कर सकते हैं एडजेक्टिव में। Yes, sir. फॉर यस एग्जांपल सर अब हमारे पास फॉर एग्जांपल if use anything clear like any word like divided, suppose. Behavior. Yeah, decided. If I say government decided, clear, decided to impose, clear, heavy taxes on, for example, on anything, clear? तो अब यहां पे देखिए कि अब डिसाइडेड है कि नहीं? डिसाइडेड। हाँ, Yes, sir. अब Yes, sir. अब डिसाइडेड का नाउन फॉर्म क्या है? डिसीजन Implement. डिसीजन, क्लियर? डिसीजन है ना नाउन फॉर्म? Yes, sir. तो डिसीजन है, क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल if I say imposing, impose, can I say imposing heavy taxes? Now what if I say imposing? Impose means imposing heavy taxes. So now don't you think like impose we have changed the word form to imposing ing? We Yes, did sir. what? Word formation हो रहा है ना? Yes, Imposing sir. heavy taxes, clear, is the decision, for example. Decision of whom? Government. Clear? So now can you see we brought some changes, and we brought some changes in what? We brought the changes and word formation. हमने मतलब synonym इस्तेमाल नहीं किया। Am I right? हमने impose को imposing कर दिया, हाँ? And then we change decided को decision में convert कर दिया, और structure को भी change कर दिया ना? We change the structure as well as word formation भी हुआ।
वर्ड फॉर्मेशन भी हुआ। तो दो चीजें हमने यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रामर में जो आपके स्कोर है GRA का वो इंप्रूव हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? सर ये डिसीजन जो है ये तो हमारे पास नाउन हो गया, डिसाइडेड वर्ब था। अब ये यस। इम्पोज से इम्पोजिंग हुआ है, तो ये वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? इम्पोज को आईएनजी में हमने जरन में कन्वर्ट कर दिया, जरन में। टू इम्पोज, इम्पोजिंग। इन्फिनेटिव ठीक। को हमने कन्वर्ट कर दिया जरन में। टू बेस प्लस ओके। बेस फॉर्म वर्ब इज कॉल्ड infinitive and we have converted that into imposing. तो अब ये जो चीज है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। ओके। तो तीसरा हमने जो रूल पढ़ा वो क्या था कि वर्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। और इसके साथ चौथा रूल में लेट मी ऑल्सो टीच यू, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग। अब रीअरेंजिंग का मतलब क्या है कि आपके पास अगर दो वर्ड्स है या तीन वर्ड्स है, ठीक है, तो आप उन अल्फाज को क्या कर सकते हैं, सिनोनिम इस्तेमाल नहीं करते, आप उनका जो अरेंजमेंट है। देखिए, एक तो स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट है कि मतलब आप पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, राइट। एंड द सेकेंड थिंग कि दो वर्ड्स आपको मिले, फॉर एग्जांपल ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन मिले ना, ऑयल प्रोडक्शन। अच्छा, स्पेलिंग को बस इग्नोर करें। ऑयल प्रोडक्शन, सो कैन आई से प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, कह सकता हूं। Yes, sir. तो ये Yes, इसे sir. हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट अवे वी कॉल इट व्हाट, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजिंग वर्ड्स। रीअरेंजिंग वर्ड्स। देखिए, मैंने आप लोग को क्या कहा, मैंने ये बता दिया आपको दैट इट कैन बी चेंजिंग वर्ड, चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक तो जुमले का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, एक हम वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक हम रीअरेंजिंग वर्ड्स भी कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन टीन एजर्स लिखा है। तो कैन आई लाइक राइट लाइक टीन एजर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लिख सकता हूँ ना। Yes. तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट रीअरेंजिंग। तो ये भी हमारे सर पास किस चीज में आ रहा है, पैराफ्रेजिंग में। यस प्लीज। सर अगर हम इस तरह मतलब एज यू सेड ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स, तो अगर इसको हम इस तरह चेंज कर दे यंगस्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह मतलब लिख सकते हैं सर। लिख सकते हो, वो तो सनन में कन्वर्ट होगा ना, मैं तो ग्रामर यहाँ पे वो तो कर सकते हैं। हम्म। लेकिन ये तो हमें किस चीज के आपके स्कोर इंप्रूव होंगे इससे, ग्रामर। यस सर, आप तो कह रहे हैं कर स्ट्रक्चर चेंज सकते हैं, वो करना तो है। होगा, वो तो होगा। मतलब एक स्टूडेंट है कि मतलब दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यूज ऑल, क्लियर। मतलब आप स्टेटमेंट को देखेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर आप इस पे अप्लाई कर सर सकते हैं। मैं इस तरह कह रहा था ना सर, वो सेंटेंस बिल्कुल उसी तरह मीनिंग उसी तरह देगा, लेकिन उसका वो ठीक फॉर्म है, जो फुली चेंज सिनोनिम है होगा ना, वर्ड। सिनोनिम तो आपने इस्तेमाल करना है, वो तो सिनोनिम स्वैप है, वो तो इस्तेमाल कर वो सकते तो हैं। यहाँ पे हर टेक्निक के लिए अलग अलग वो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो तो या तो हम सारी एग्ज टेक्निक एट अ टाइम यूज हाँ, करें? आप बस अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे मैम। टेक्निक, नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अगर एक जुमला एक्टिव में है तो आप पैसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो अब ये एक्टिव पैसिव किस चीज में आ रहा है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में है ना। तो अब यही जैसे मैम मारिया ने कहा कि इफ यू वांट टू चेंज, क्लियर, इफ यू वांट टू चेंज सिनोनिम्स तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रक्चर को भी चेंज करें, सिर्फ सिनोनिम को सिनोनिम स्वैप ना करें। तो ये बच्चों के क्यों कम बैंड आते हैं आपको पता है, वो सिर्फ मतलब सिनोनिम स्वैप कर रहे हैं। तो सिनोनिम स्वैप करने से तो सिर्फ वोकैबुलरी के स्कोर बढ़ेंगे, तो ग्रामर का क्या, ग्रामर का तो बेड़ा गर्क है पैर। तो जब आपके ग्रामर में कम स्कोर आएंगे तो आपके ओवरऑल बैंड का क्या होगा, कम हो गया ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल पीपल कंज्यूम मोर फास्ट फूड, सो मोर फास्ट फूड वॉज कंज्यूम्ड। आप वॉज कंज्यूम की जगह जैसे शेरियार ने कहा कि वॉज कंज्यूम वॉज ईटन वॉज यूटिलाइज्ड। यस तो वो सर। तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते, मैं तो एक एक टेक्निक को पढ़ा रहा हूँ, फिर तो आपने ये सारे टेक्निक वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सर अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज होगा और साथ में सिनोनिम भी ऐड कर दें तो फिर सेंटेंस बहुत सही बनता है। तो मैंने तो ये नहीं कहा ना भाई कि वो नहीं करना, खुद ही करना है, वो तो जरूरी है कि वो तो यूज करना है, वो तो आपने जरूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये कंबाइनिंग और स्प्लिटिंग जो है, ये फिर मैं वहां पे आपको टीच करूंगा जब हम मल्टीपल चार्ट्स पढ़ेंगे। आप इसकी आपको ये अभी जरूरत नहीं है इसकी। तो दिस इज हाउ लाइक वर्ब, अगर आपके पास वर्ब है तो सम ऑफ द वोकैबुलरी आई हैव यूज्ड हियर, यू विल फाइंड दैट इन योर
book as well. Clear? तो अब हमने क्या करना है कि these are some of the mistakes we need to avoid. First of all, mistake number one, while writing the introduction, copying clear the question words directly. ये गलत होगा. जैसे यहाँ पे ये है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, प्रॉम्प्ट है, हम इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, and this is how like exactly I have mentioned the same thing. So this is totally incorrect. What we are going to do, we are going to change that. जैसे यहाँ पे चार्ट लिखा है तो मैंने चार्ट की जगह क्या लिख दिया, बार चार्ट. यहाँ पे शोज है तो मैंने क्या कर दिया, illustrates. The amount of money spent on books, so we say the expenditure on literature. In Germany, France, in 3 European countries over, they have written what between and, so I change it from to. So all 5 points are mentioned here. Point number one, name of the graph. Number two, verb. Number three, what, जो subject है. Or number four, where. Number five, when. Number two, using a synonym that changes meaning. आप लोग ये synonym ना इस्तेमाल करें कि जो बिल्कुल meaning change कर दे, ठीक है ना? तो मेक श्योर कि आप ऐसे synonym को आपने इस्तेमाल करने कि जो बिल्कुल exact meaning दे. आप then not using the time period, क्योंकि मैंने कहा कि 5 points आप लोगों ने इस्तेमाल करने. If you don't use the time period तो फिर 4 points इस पे mention होंगे ना. तो 4 points का मतलब क्या है कि list span. For example, this number one, number two, number three, number four, and number five. अगर मैं fifth point को ना लिखूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, can you see? And we mention only 4 points, so this is incorrect. We are supposed to mention how many points? 5 points. अच्छा, आप राइटिंग टू लॉन्ग इंट्रोडक्शन, तो इसमें आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते. सो कीप इट कंसाइज. जो 5 पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं 5 पॉइंट्स को आपने इंट्रोडक्शन वो लिखना है. और एक ये कि आप अपने तरफ से इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते. अवॉइडिंग क्लियर एयरिंग पर्सनल ओपिनियन, तो आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं, बिकॉज इट्स अ रिपोर्ट राइटिंग. तो ये फैक्ट्स की बुनियाद पे होता है, फैक्ट्स. तो इसमें आप चेंजेस नहीं लेकर अपना ओपिनियन नहीं दे सकते. इसमें आप आई थिंक या आई Which type थिंक, of sentence we will use in this essay? इसमें आपने फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है भाई. आपको तो डेटा मिला है ना, इसमें आप ओपिनियन नहीं जी यूज कर सकते. ओपिनियन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है. यू कांट से दैट आई थिंक द चार्ट बिलो इज इंटरेस्टिंग. सो इसका क्या मतलब है? दैट्स टोटली रॉन्ग. सिंपली आपने लिखना क्या है, द चार्ट शोज, द चार्ट डिपेक्ट्स. तो आई थिंक, माई थिंक या इंटरेस्टिंग में इंटरेस्टिंग ये चीजें नहीं होती. यू हैव टू बी न्यूट्रल. क्लियर? नो पर्सनल ओपिनियन और आई और शी और ही, इसमें ये कोई आप ऐसे तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? इस रिपोर्ट राइटिंग. तो रिपोर्ट राइटिंग में आपने स्टैटिस्टिक्स को बयान करना होता है. अच्छा जी, आप यहाँ पे देखिए कि okay, let me show you, and in your book like there are many, so then later on you can perform it by you. This is the prompt. The bar chart below shows, अब इसे देखिए. Point number one, below shows number of, this is what, then 5 countries, and then in 2000. आपके ख्याल में इन तीनों में आप देखिए, इन तीनों में आपके ख्याल में Excuse me, कि sir, your voice is too slow. my voice is too slow. Okay, let me speak a bit louder. Okay, can you hear me now? Yes. كثير تيز شو सर. खासा खैर दे. मैम लगा वास्ते दा स्पीकर हम तेज का, शायद कि आपके स्पीकर का हो, क्योंकि मैं आई स्पीक अ बिट. मैं तो काफी, मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोलूं. आप इन तीनों, like just take example for the first A, B, and C option, and just let me know that which clear of the introduction part B. do you think like is B. the best one? A, B, C. बी I सर think the बी. B one is Sir, the B one. Okay, ए कॉपी है the ए B one दूसरे is रो सी की more accurate ओपिनियन. and more okay, perfect, sir. good. पॉइंट सब किए गए. Yeah. लास्ट वन में क्या है, ओपिनियन है कि नहीं, या गलत हुआ ना? Yes, sir. I think. थिंक कह रहे हैं. या आई थिंक. वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इट शोज द, ये इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? सो आवर लैंग्वेज हैज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर. नाउ द प्रोवाइडेड बार ग्राफ, हैव वी मेंशन नेम ऑफ द ग्राफ? यस. वर्ब शोज? यस. यस. Number of tourists visiting 5 countries, the total number of Yes. who visited 5 different Asian nations. And then in 2000, in the year 2022. So yes, 22. we have included all 5 points, and that's what the perfect paraphrasing is. Okay, let me now show you
some practical examples. अच्छा जी, अब यहां पे देखें line graph. Usually they don't give you name of the graph. Okay, so this is now it's line graph, right? Shows, then we have shows household recycling rates in 3 different countries. अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है? These we call categories. What do we call? Let's tomorrow inshallah we'll study it. Categories. अब ये 3 categories है, तो आप paraphrasing में क्या करना है? आपने specify करना है. Instead of writing three Hence different को. countries, आपने क्या लिखना है? Yes, sir. In the UK, France, UK, and France and Germany. Germany. Name them, okay? Yes, sir. And then between को किस चीज में convert कर देंगे? From. From to और end को? To. to. यस, अब इसी सवाल को आप लोगों ने दोबारा आप लॉग इन हो जाए प्लीज. साइन अप, सॉरी साइन अप नहीं, साइन इन. इस टाइम तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता. आप दोबारा साइन इन हो जाए, ठीक है? एंड आई एम गोइंग टू गेट लॉग इन अगेन.